So, Amit Chaturvedi, after like I don't know how many years, maybe I don't remember how many I years, but 2000, 2002, I was in Nagpur. yeah, And I think, yeah, 2003 or 4, you left Nagpur and you went to Bombay. 2005 I joined the hospital, right, Vocard, because I Okay. passed out in 2005, and then I think 2006 I went to Mumbai, and that's where I think And in 2006, I joined Asian Heart. right. But how long you were there in Vocard? Worked out for almost 2 years I was there. Okay. And after that, I moved to Asian Heart. There also, I was there for 2.5 years. Cool. And that time you were in Safety what was the name? Safi. Hospital, yeah. Safety Hospital. Yeah. Cool. So nice, good to connect with you, Amit. I think this is really helpful. But for our audience, whoever will watch in future, I just want to introduce yourself. Your video is not there, so let me welcome everyone first, and then maybe I will request you to introduce yourself. Tell everyone about your journey from being a nurse and how you've transformed yourself to be a mind guru, and why that mind guru, in a very short brief about how and why about Mind Guru, and maybe an introduction to yourself. So, guys, whoever is watching this video on YouTube, um, Amit Chaturvedi is a Mind Guru, and he works with a lot of people to transform their mindset, and he can talk about it more. So, over to you, Amit. Okay, thank you, Ajinkya. Thank you for giving me wonderful opportunity. And hello, everyone. I'm Amit Chaturvedi. I'm a father of a daughter and a son, and a husband to a loving wife, a nursing officer at Asia's largest liver institute, turned into NLP mind expert, mental wellness, and emotional coach, author, and popular among the people by the name Mind Guru Amit, and serving the health and wellness industry for the past 20 years. And see, it was never predicted that one day Zinx will be taking my interview, or I'll be discussing uh, this thing on the same cause, right? Yeah. So, Zinx, I started my journey in 1999, where after finishing my 12th, I decided to be in IT sector or to be a lawyer. Hmm. But it was already decided by mom and my mama, yani ki my maternal uncle, that I should go for nursing, because at that time nursing was on boom. Oh, really? Everyone was running behind the nursing. So Okay. then I came to Bangalore for nursing to become a clinical nurse, where I was working in a hospital as a staff nurse. I worked with many corporate hospitals like Wockhardt, Asian Heart, and Metro Heart. You know, so you can feel it when you care for others. It gives you extreme satisfaction when you save Agree. someone's life, assist through birth, and when you see death. Sometime it is heartbreaking also. Yeah. So having nursing as my profession taught me great life lessons and strengthened my ability to deal with any situation that might come in future. Yeah. So as children, we dealt with difficult situations where my father worked as a watchmaker and my mother was a housewife. Um, at that time, we can call, I mean, what to say, poor family. So, Oh, so when I was 4 year old, suddenly we lost my father. Until last 2017, for 37 years, we were not aware that whether he's alive or dead. oh, really? And at that time there was no social media and all. We have tried a lot to find where he's. Anyway, till 1999, my mother and my mama was shelter for me. And Oh, after finishing my 12th, my professional qualifications took me away from my family. And for a period of time, like, you know, and when I came into real world, I learned to stay with my friends, because school friends is different, and your professional friend is different. When you come to
different state, you may find some challenges, right? Right. So how to deal with daily expenses, studies, as well as I try to learn music. As you know, I was Yeah. learning guitar from Raj. Yeah. Uh, this situation required me to take hard decisions sometime, and so I had to figure out how to deal with those situations. Right. And situations were not easy for me. Circumstances dragged me into depression. I tried to end my life twice, Oh, really? but that was not my destiny. Hmm. Because as a strong believer in self development, I help myself to learn about the mind from different mentors and books, and that is why I can feel people's pain. And finally, I cracked the formula to how to be stress, anxiety, and depression free life, how you can live it, and how to keep yourself mentally and emotionally hurt proof so nobody can hurt you emotionally, and how to protect yourself from toxic people and from the environment and from the dirty office politics, Yeah. and how to master the law of attraction so that it is always work for you, and how to manifest your dream into reality. Yeah. And if you want to do, let me we can do a 2 to 3 minute exercise to be in a good state. And Yeah. this is the gift from me, from my side, to all of you. So whenever you feel that you are dealing with having stress, anxiety, you can use it throughout your life, and it is a very wonderful exercise that we will can later we can do it in a whenever we require. So we can continue with the discussion, and in the final this thing we'll do it. Definitely. I would love to learn that technique in terms of how a quick fix. Everybody wants quick fix, Amit. You know that, right? If I'm stressed, I don't know what I need to do to fix it faster. I just wanted to fix. Now, if there is a tool which can help us just to relax and calm down ourselves for a minute, I think that's a big bang. Whenever we learn these techniques from you, maybe by in the course of this particular talk, I think that would be really helpful. And I think this story of yours is really profound. I think your life story has transformed yourself, gave you an opportunity to grow and help others grow as well. The way you came out of so tough situations, I think you've cracked a formula how to manage or how to unlock your brain. Right, that's what I wanted to talk about today. How to unlock your brain. So let's talk about this how to unlock your brain formula from your perspective. And the mostly I want to focus on people who are working in IT organizations, like for a longer duration, mid-career IT people, where they face a lot of stress both sides, like because they have their family, they have their work, they have their finances, and a lot of pressure. So unlock your mind for people who wants to understand what are the common problems they face. And so I think I would just hand over to you and talk about unlock your mind. Let's discuss on that. Yeah. See, Ajinkya, everyone is aware about physical health or physical pain, or you can say physical stress. Like when you feel tired, you go for rest. But Right. very few are aware about the mental or emotional pain, right? And everyone is stressed. Even a school going child is having a stress, right? And because of this stress, people are suffering with anxiety. Right. As you and I belong to a medical profession, I mean, still we are connected with the same thread. Yeah. So you might have experience in like when a person go to first time to hospital, and he complained about some anxiety issue. I mean, the word is different. So I use a little bit of Hindi for to explain Definitely. this. Please go ahead. Yeah. Like No worries. when जब भी कोई इंसान पहली बार ओपीडी में जाएगा ना, तो वो डॉक्टर को क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरे को बहुत घबराहट होती है, Yes. मेरे को रात को नींद नहीं आती, मेरा हार्ट हमेशा बहुत तेजी से धड़कता रहता है, मैं सांस नहीं ले पाता. और डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर उनको कुछ
इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको एक स्लीपिंग पिल दे देते हैं, जितना देर ये सोता रहेगा, एक अच्छी नींद रहेगी, उतना देर वो एंजाइटी फ्री रहेगा. सो राइट, सो एंजाइटी इज अ फर्स्ट सिम्टम ऑफ एनी डिजीज. अगर हम एंजाइटी को मैनेज करना सीख जाए, Right. तो आप बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी को होने से बचा सकते हो अपनी लाइफ में. ठीक है, मेरे पास आज मैं पिछले 20 साल 13 ईयर्स से मैं यहाँ दिल्ली में एक लिवर इंस्टीट्यूट है, एशियाज लार्जेस्ट लिवर इंस्टीट्यूट है, और वहां पे जब भी कोई इंसान पहली बार ओपीडी में आता है या इमरजेंसी में आता है, तो दिस इज कि सर वो घबराहट होती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, राइट. और वो घबराहट ही उनकी एंग्जाइटी है, बट वो उसको समझ नहीं पाते. Right. और मैंने बहुत सारी जो हिस्ट्री शीट डॉक्टर्स फिल करते हैं जब पहली बार जो हिस्ट्री ली जाती है, तो उसमें एक वर्ड यूज करते थे, घबराहट, और वो घबराहट ही लिखते हैं. ठीक है, तो मैंने उस वर्ड को जब पकड़ा, मतलब कैच किया कि यार ये वर्ड क्या है, और फिर मैंने जब अपने पेशेंट्स के ऊपर जब उसको पूछा कि यार ये घबराहट हो रही है तुम्हें, तो घबराहट में क्या फील होता है, तो ही सेज कि मेरे को सर पे भारीपन रहता है, कंधों में भारीपन रहता है, कई बोलते हैं कि पेट में उनको जीआई अपसेट रहता है. Right. और जो जीआई अपसेट है वो एक तरीके से डॉक्टर्स उसको एक डायग्नोस्टिक नेम देते हैं, एक मेडिकल टर्म है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. Yes. राइट. सो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम है, और ये सारे एक्सपीरियंस अगर आप देखो, तो बच्चों में आपको सबसे पहले ये आईबीएस देखने को मिलेगा कि जब उनके लिए एग्जाम की डेट सर पे आ जाती है और उनको कल एग्जाम होने वाला है, या अचानक से उनको बोल दिया जाए कि कल आपका स्कूल में टेस्ट है, तो उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता Right. Right. है. दे फील abdominal discomfort, Yes. right? Agree. And same thing happened to many other people also. Some people may feel the heaviness on chest, some people may feel backache. So all these symptoms are related to your stress and anxiety, Right. right? Right. And when we talk about mental or emotional stress, we should know how it is developing in our mind, right? Like you and I, almost same age. You might be younger to me, 2 to Yeah. 3 years, right? Yeah. So we are crossing, we are reaching to 40s age group, Yes. and we have lived 40 years. हमारे पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, अगर बचपन से लेके अभी तक हम देखें तो, Agree. right? And in that, in those 14 years, we have lived a past. Because if we divide your time into three segment, one is your past, one is your present, and one is your future. Right. So past means भूतकाल. So ये भूतकाल नहीं है जिंक्स, Right. ये काल का भूत है जो आपको हमेशा डराता है. Ah. Very profound. Because you have lived a past where you were not happy, you were struggling with your daily living, you were struggling with the people, you were struggling with I mean, बहुत सारी चीजों के साथ आप स्ट्रगल कर सकते हो. उसमें कई बार आपने देखा होगा कि पीपल गेट ह्यूमिलेटेड ऑन वर्क प्लेस और बाय समबडी एल्स और बाय रिलेटिव, उनको नीचा दिखाया जाता है, दे फील लो ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दोज मेमोरीज ऑलवेज नॉक इन योर माइंड. जब भी आप उस इंसान को देखोगे या उस सिचुएशन को देखोगे, you can experience whenever you pass through your school, you are not even entering it, but you can imagine whole ground and whole your classroom, and those Right. friends were studying with you, so you can imagine those people, right? So whenever those memory come in your mind, immediately your mind will I mean reach in fight and flight mode. Yeah. कि आपकी घबराहट बढ़ जाती है, आपकी हार्ट बीट, your heart beat get increases, your breathing gets slower, and you feel anger, right? So according to many books and neuroscientists, about 60 to 70 thoughts, 60 to 70,000 thoughts Yeah. per day passes through your mind. Yeah. And these thoughts have a special feature. What is that? That special feature is A and T. What does it mean, A and T?
most of your thought is automated negative thought and repeated also. आप देखिए क्योंकि आपने एक पास्ट को जिया है, you have lived a past, so you have those memories in the form of visuals or in the form of some sound or in the form of some feeling. Like whenever, if I tell you, we consciously we are talking here, right? Right. But Zinks, if I tell you, just imagine your best friend. So you're getting a picture into your mind. Absolutely. Yes. And if I tell you to remember, recall the voice of your father when he call you in anger or in a loving way. Yeah. So you can hear those voices, those words in your into your mind, right? And the third form is your feeling. So if I tell you to remember that feeling when you kiss your girlfriend first time, so you can feel that feeling also. Yep. So still it is there, but it happened long back ago. Right. And because you have lived a past, so most of your thoughts are related to your past only. Right. So what you have done in your school days, what you have done in your work, your college days, how you have struggled, you have those picture along with you, right? Yes, your mind doesn't have the picture of your future, क्योंकि अभी तक हमने वो देखा ही नहीं है. Right. और देखिए कि जब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको एक दूं कि यू हैव ए लैंड, यू हैव ए प्लॉट, और उस पे अजिंक्स तुम्हें एक अपना ड्रीम होम बनाना है, राइट? तो उस ड्रीम होम के लिए यू हैव सम आई मीन मेंटल स्ट्रक्चर विद इन यू कि मेरे मेरे इतना बेडरूम का घर होना चाहिए, उसमें किचन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, टेरेस पे जाने के लिए इस डायरेक्शन में होना चाहिए, बाथरूम में जकूजी चाहिए तो वो किस साइड में होगी. So you have all those images, and with those images you go to architect to draw a blueprint, right? And he listened to you and he draw a rough image on a paper. So what he did, जो आपके अंदर जो पिक्चर थी आपके ड्रीम होम की, उसको निकाल के उसने पेपर पे रख दिया. Right. Now you have a map how to build your home, your dream home, right? When we talk about the future, nobody has the clear picture in their mind. Right. कि हमें फ्यूचर कैसा चाहिए, अगर हेल्थ चाहिए तो हेल्थ कैसी होनी चाहिए, if you want to live wealthy. So most of the time people want to look rich, but they don't want to be real rich, क्योंकि real rich you cannot see by your eyes. Right. Most of the time people want उनको मालूम ही नहीं है कि फ्यूचर में उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या, और वो उस चीज भाग रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए, राइट? और वो अपनी प्रेयर्स में भी प्रे कैसे करते हैं कि हे भगवान मुझे बीमारियों से दूर रखना. So ultimately what you are asking for, you are asking for the diseases. Right. हे भगवान मुझे वो इंसान मेरे सामने नहीं पड़ना चाहिए, उसको देख के मेरा मूड खराब हो जाता है. So ultimately आपने मांगा क्या, कि उसी इंसान के बारे में आपने बोला, राइट? और आपने फील किया होगा कि आप जिन चीजों से दूर भागते हो वही चीजें आपकी लाइफ में आपके पीछे पीछे आती हैं. एग्री? सो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस है उसको कॉन्शियस माइंड की डिक्शनरी में नो वर्ड एग्जिस्ट, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करने के लिए यू नीड ए वर्ड नो. बट व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट विद गॉड और व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट विद योर सबकॉन्शियस माइंड, देन वो नो वर्ड को इट डजंट रिकॉग्नाइज दैट नो वर्ड. इसके डिक्शनरी में वो है ही नहीं. ओके. अभी जैसे इफ आई टेल यू जिंक्या, इमेजिन करो कि आपके सामने से काला हाथी नहीं जा रहा है, और उसके ऊपर काला बंदर भी नहीं बैठा है. I could actually imagine it. Even if it is not there, you asked me not to do it, but still I could see I could see an elephant and a monkey walking across me. So and if I tell you if that monkey is not brushing the teeth,
So you can imagine yeah, that image also. Right, So right. when you talk in term of no, yeah, don't, mat, whenever you use those negative words, your subconscious doesn't recognize it. It Okay. means you're giving a direct command to subconscious to do the thing, Mm-hmm. right? So जैसे आप अपने when you deal with the kids, Mm. you tell them, what is your son name, Ajinkya? My daughter, I have a daughter, and her name is Shravya. Okay, so whenever you say to your daughter, ki, baby, don't watch TV, and in next 5 minutes, you'll find her sitting in front of TV. Right. Makes sense. Right? Yes. So that's why when you're using this word, you have to use it wisely. Mm. Instead of using this, if you give them a option, like Shravya, see, ये टीवी पर अभी वही सेम सीरियल आ रहा है, वो सेम कार्टून आ रहा है, बहुत बार हम इसको देख चुके हैं, बट इसके अलावा यू हैव टू ऑप्शन. One is we can play a game, or you can play along with your friends, you can go outside. Mm. Mm. Right? So when you give the two option, what she will say? कि पापा चलो हम दोनों गेम खेलेंगे. Right. Right. Right? Right. तो आपने टीवी को मना नहीं करना है. So when you communicate with somebody, don't say no. Just Right. give them an option. So when you give them option, your mind get engaged with those options. Right. Right. Okay. So अगर हम आगे बढ़े तो ये जो थॉट्स हैं जो आपके पर्सनल जो आपने you have lived a personal and professional life in your past. Mm. When those thoughts keep knocking in your mind, you feel mental and emotional stress. Right. Right? And you know, there you might have seen a video on YouTube or Facebook or on any social media where a professor tell everyone to the class, ki hold a cup of water in your hand, hold for a 5 minutes. How much is the weight for this cup? Right? Right. 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 So they Yeah. say this is a 50 gram. Hold for a half an hour. So then he asked, what is the weight now? So they feel the weight of that cup is increasing. Right? So after 1 hour, they feel that it is a 1 kg weight in their hand. After 3 hours, they may feel a 5 kg weight in their hand. But if they hold that cup for 24 hours, they get severe pain to their hand, or they may get paralysis to the hand. Right? Right. So same way, if you think about a thought, your thoughts are weightless. They don't have weights. But if you carry a thought in your mind for more than 20 minutes, it can cause emotional or mental stress. Wow. That's very Right? true. Because your mind is a negatively programmed device. Why it is negatively programmed? Because in life, there is no failures. There's no failure. Only there is a feedback. क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस में कभी फेल नहीं होते. You learn from them, right? Right. But when we start living in this logical world, right, we always remember by through your logics that we learn failure. We don't learn, teaching and any other feedbacks. Okay. So if you want to, if some thought is having in your mind for more than 20 minutes, you may feel headache. Really? Like if you give yourself a command, okay, I'm having severe headache today, I'm not able to go somewhere. And after 20 minutes, you can feel that headache in your mind. Agree. Right? Yeah. Okay. Huh? Or if you are having a headache, severe headache, but you are having a important work to do, and you forget about that pain, and if you involve yourself in that work, after 20 minutes, you feel that that headache is vanished. Now it's Correct. disappeared. Right.
right? So wherever your energy focus goes, your energy flows. Right? And there is some sign of stress. For example, uh, like in behavior, if you talk about the behavioral sign, then people may come late to their workplace, or they take more time in their offs or leave, and be more twitchy or nervous. If somebody, you can feel with their behavior. Hmm. And if you personally see the example in a person, Hmm. so mood swings, Hmm. being withdrawn, loss of motivation or commitment and confidence, Hmm. increase emotional reactions, Hmm. being more tearful or sensitive or aggressive, Right. right? And if you want to find a sign of stress in your team, you can find that also. There may be a sign of stress in your team that will be like arguments, higher staff turnover, like people are leaving and going, coming and going. You are not able to hold your team, Mhm. and more people talk about your sickness or absence. Like today, this person doesn't came to office or not joined your team. They may, tell ki I'm feeling very sick today. Decreased performance and Mhm. more complaint and grievances. These Mhm. are the important sign of stress in team. But later, person can feel anxiety, and if you don't heal your anxiety in an initial stage, you if you heal your anxiety in initial stage, you can prevent many diseases, as I said earlier. Right. Right? And how your anxiety effect on your body systems, like blood pressure, diabetes, stroke, cholesterol, psoriasis, allergies, cancer, recurrent infections, gut disturbance, and list is endless. Because according to WHO, approximate 1 lakh diseases can occur in human body, Wow. and more than 80% of them are because of your thought process. Right? Really. Always remember, there is always a positive intention behind your every behavior or habit. Right. Like if somebody is coming late in your office, right? So if you study this behavior, that this is the negative behavior. Coming late to the office is a negative behavior. But if Right. you go deep down behind this intention, what is the real positive intention for that particular person? Hmm. So when I ask people, person, ki, why you are coming every day late? Yeah, it doesn't look good. If somebody put a remark on your sheet, it will hamper your growth, or you won't Right. get your this thing. So Right. ultimately they tell me ki, when I every day I used to put 4 o'clock alarm in my mobile, but whenever this alarm ring up, इंटरनल साउंड मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि अभी तो 4 बजे, थोड़ी देर और सो जा, और मैं उस आवाज को फॉलो करता हूँ, अलार्म को स्नूज करता हूँ, सो जाता हूँ, राइट? तो उसके पीछे उसका पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? मैंने पूछा उससे कि व्हेन यू heard about this sound, this sound is coming from you, कि sleep for little more hours. So what Right. is the positive intention? So what they say कि I think I need more rest. Hmm. Hmm. Right. That is a positive intention, and because of that he's not able to wake up early, and when he don't wake up early, he'll come office late. Yeah. Makes sense. Right? And you have seen, I think, some more people like their habit of smoking. Yeah. Right? So what is the positive intention of your mind behind this behavior or habit? You No know, idea. this is the negative one. Nobody like a smoking person, like, right? But what is the positive intention of your mind? Your mind always want you to be stress free, Right. and it gives a sense of relaxation when you smoke.
So to gain that sense of relaxation, you go and smoke. और उसमें होता क्या है कि आपके अंदर, if somebody is want to smoke, what happened there? There is a internal image. या तो वो सिगरेट की स्मोक की सिगरेट की इमेज आएगी, या किसी पान ठेले की इमेज आएगी आपके अंदर, राइट? या आप एक्सटर्नल अगर देखेंगे तो एक्सटर्नल कोई स्मेल आएगी और आपके अंदर वो ट्रिगर होने लग जाती है फीलिंग कि चल यार एक सिगरेट पीते हैं. You yourself communicate with yourself that चल यार सिगरेट पीते हैं. And when you follow this communication, you find yourself you're having a cigarette in your hand and smoking it. Right. Right. So there is always positive intention behind your every behavior or habit. So if you want to really change some unproductive habits or behavior, you have to find the positive intention behind it. And that's, if I tell you the process, it take a longer period of time. So we can discuss it in later listening, right? So this is how people need to aware that if somebody is having headache, constant headache, migraine, allergies, not able to focus, concentrate, they are having a lot, more argument with the people, and there is a short temperedness, overreaction is there. So all these things are sign of stress and anxiety at workplace. Right. Right. Makes sense. One second, I'm just gonna. Yeah, sorry. So I was looking off my question. So let me reiterate things like when you say the most important thing people should be aware of is to understand what are the signs and symptoms of stress. Currently, I think people are not aware they are in stress. However, they are in stress, but it's like completely undetectable for them. Yeah. Yeah. So they shout, they get angry, they get stressed, they get sad, they get offended by other people. These are all signs and symptoms of stress at workplace, which you're saying, right? Now, the question is, how should people immediately or through a process start building their mindset, which can divert them from the situation to a desired state of calmness, positivity, and other things, which will help them grow as a at workplace, build their relationship with their life partners or relatives, interpersonal relationship building at workplace, getting more opportunities to showcase their potential. What should they do to divert these situations and overcome these situations? What should they do? Good question, Ajinkya. And Buddha says your mind is everything. Right. And what you think you become. Right? Right. And when you are stressed or when you are in anxiety, there are certain thoughts which are running in back of your mind. Right? And if you immediately you can stop them. Like your mind is a one way, where vehicle can move from one direction to another direction. Right. But what you do there when you are in a stress, like you hold a thought. क्योंकि जैसा as I said कि 60 to 70,000 thoughts per day comes in your mind, and this is a one way, right? और ये एक हाईवे है और इस हाईवे पे 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो व्हीकल्स वो थॉट्स भाग रहे हैं. And what you do, what mistake you do, you become a invigilator. And you hold a thought कि ऐसा हो गया तो जिंक्स को बॉस ने बुलाया, और जैसे ही आपने सुना कि बॉस ने बुलाया है, immediately you distort this information, your mind distort this information कि बॉस ने कहीं ऐसा तो नहीं मेरी कोई backbiting कर रहा है, or boss has find some mistake in my project or he want to fire me, right? So you're holding this thought.
Right. If you are holding this thought and you find that other vehicle also is coming from backside, so what do you, in real life, what they do, what the people do when some vehicle is there, they keep on honking, Right. right? And which make you more stressed. Right. So in spite of holding those thoughts, just leave it and face the situation. Right. But I think mostly Right. people, So sorry to yeah. cut you off, but mostly people are afraid of facing that situation. I can talk about my personal story. Even today, whenever I talk to my boss, I have this thought in my mind: "Arey, what will happen if he says anything?" And I try to avoid that situation. I just keep myself away from getting into any conversation, which will put me into or bring that topic which triggers my stress. Right. So that happens with everyone, that even if they know that there is nothing happening with them, they still are afraid of going ahead and take that step of, or a bold step of facing these situations, the stressful situation which you're talking about, right? Holding a thought, I agree, we all do it, but to learn this ability to release a thought, I think that's where your unlocking the mind or potential comes in picture, where people will be trained to identify which thought to hold on to and which thought to release, right? And how to manage these situations better, right? Hmm. See, Jinx, before we go to deeper in this session, please allow me to share my whiteboard. Yeah, yeah, Let please. us understand some basic, I mean, make me co-host so that I can share my whiteboard. Okay, thank you. So, can you see uh, my whiteboard, I right? can see now, yes. Yeah. So, this is a human like us, Right? right? And we are more beautiful than this, right? Right. And we have some five senses, like our visual sense, Mm-hmm. our auditory sense, like our ear, our Mm-hmm. kinesthetic sense, our skin, our olfactory sense, our nose, sorry for my handwriting, and our gustatory sense, our tongue, right? These are Mm-hmm. personal receptor Mm-hmm. from which you gather information from environment. Right. And at present time, approximate 2 billion byte information is there surround you. Okay. Right. And to understand whatever is happening around us, it is a event one. Okay. ये एक event है जो हमारे चारों तरफ हो रहा है. Right. Okay. और इसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं, whatever is happening here, you are taking information through your visual sense, to your auditory sense, to your kinesthetic sense, to your nose, and to your gustatory, यानी कि tongue. Okay. When this information go to your mind Mm-hmm. or to your physical body, to your brain, what your mind do? Your mind use three filters. These filters are delete, distort, and generalization. Okay. So Mm-hmm. what happened in deletion, distortion, and generalization? Okay, you delete many of information. Right. Your mind naturally do it. Like when you go to your office from your home, you see many people faces, many people's many sounds, but at the end of the day, you are not able to remember everything as it is Right. because your mind deleted that unuseful information from your mind, right? Right. What is distortion? In distortion,
you give a meaning to any event. आप उस घटना को एक मीनिंग देते हो, उसका एक मतलब निकालते हो, और ये डिस्टॉर्शन is the biggest reason behind your sadness, your unhappiness, your depression, your anxiety, right? So what you do in distortion, like as we have taken the example कि आपको आपके बॉस ने बुलाया and you have mentioned that कि मेरे साथ भी होता है कि बॉस बुलाते हैं तो मेरे अंदर घबराहट होना शुरू हो जाती है, राइट? एक प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ इंसिडेंस है वो मैं बताता हूँ. चूंकि मैं आईसीयू हेड कर रहा हूँ, मेरे अंडर में 60 स्टाफ नर्सिंग स्टाफ है. तो एक हमारी जो मैनेजर हैं उनका फोन आया कि अमित ये स्टाफ को मेरे पास भेजना. मैंने कहा कुछ अर्जेंट है मैम. बोले नहीं, उसका चेकबुक आया हुआ है तो वो कलेक्ट कर लेगी मेरे से. मैंने ठीक है मैम. अब वो लड़की को मैंने मैसेज दिया, वो नाइट ड्यूटी पर थी, और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में दोबारा हॉस्पिटल में पहुंचा तो मैंने उससे बोला, मैंने बेटा तेरे को मैडम ने बुलाया, बस इतना ही बोलना था. एंड इमीडिएटली शी स्टार्ट डिस्टॉर्टिंग दैट इंफॉर्मेशन कि मैडम ने भी है, मेरे को मैडम ने क्यों बुलाया है, मैडम कहीं मेरे को डांटेगी तो नहीं, कल तो मैंने एक पेशेंट शिफ्ट किया था उसमें तो मेरी सारी चीजें ठीक थी, मैंने तो सारे नोट्स भी अपने कंप्लीट लिखे थे, कहीं किसी ने मेरी चुगली तो नहीं कर दी भैया, किसी सुपरवाइजर ने मेरे बारे में कुछ गलत बोल दिया. और मैंने की नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्यों अपने आपको परेशान कर रही है. और मैंने की मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बात के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा, ये सिर्फ तेरे दिमाग का बहम है. तो बोली ठीक है. नेक्स्ट डे आफ्टर हर नाइट ड्यूटी शी वेंट देयर एंड बिफोर एंटरिंग टू द रूम शी वाज शिवरिंग. उसको पसीना आ रहा था, ठीक है. और जैसे ही उसने गेट खोला, मे आई कम इन मैम, उसकी आवाज में भी वो यू कैन फील इट. तो मैं भी उसके साथ गया था क्योंकि मेरे को भी काम था. मैंने कहा चल हम दोनों साथ में चलते हैं, कुछ रहेगा तो आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू. तो मेरे को तो मालूम था कि उसकी चेकबुक उसको पिकअप करनी है, बट फॉर हर सपोर्ट आई वेंट देयर बिकॉज आई वाज आल्सो हैविंग सम वर्क. और उसके पूरे हाथ पैरों से पसीना आ रहे हैं, चेहरे पर पसीना आ रहा है, और डोर नॉक करके बोले मे आई कम इन मैम. यस कम इन. उसका नाम लेके उसने बोला कि आओ आओ अंदर आओ, और उनके चेहरे पे एक स्माइल थी. और उन्होंने बोला कि बहुत दिन से मैं तुमसे मिलने की सोच रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तुम्हारा बिजी शेड्यूल था, मेरा भी बिजी शेड्यूल था, और मैंने सोचा क्यों ना कि तुमसे एक बार मुलाकात की जाए, चाय पियोगी, नाइट ड्यूटी करके आई हो. तो बोलती हाँ ठीक है मैडम. उन्होंने, हम तीनों ने बैठ के चाय पी वहां पे, और फिर उन्होंने बोला कि आपकी चेकबुक आई हुई है और वो देने के लिए मैंने बुलाया. और वो लड़की फिर आई मीन सेम वे सेम थिंग हैपन टू अस. हम हर चीज को डिस्टॉर्ट करते हैं. लाइक ऑफिस में आपने देखा होगा जिंक्स कि आपके दो कलीग हैं जिनसे आपकी अच्छी नहीं बनती है, एंड दे आर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर एंड दे आर टॉकिंग and they are discussing about a joke. And as you enter in the room, and because of that joke, they are laughing. As you enter in the room, and if they look at you, what do you think? They laughing on me. ये मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं, मेरे ऊपर कोई ना कोई पॉलिटिक्स चल रही है इनके दिमाग में. Right? रियलिटी ऐसा नहीं है. Because always remember, your perception is your reality. Right. Everything is your perception. Right. And in generalization, what this is the third filter of your mind. In generalization, what you do, Jinx, to understand generalization, first we should know about the universal truth, because there is there are two type of truth in your life. One is universal truth and one is generalized truth, right? What is universal truth? You will not find anybody fighting or be in a conflict because of those universal truth. No. Like कि सूरज पूरब से उगेगा, इसके लिए कभी किसी को फाइट में नहीं देखोगे, हस्बैंड वाइफ को भी फाइट में नहीं देखोगे, अपने आप को भी उस फाइट में नहीं देखोगे, राइट? 5 + 5 = 10. दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट? पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है.
right? You have many generalized truth, and from where it is coming? Fine. Those generalized truth is what? कि अभी तक कोई घटना आपके साथ घटित नहीं हुई है, आपने सिर्फ उसके बारे में सुना है और अभी तक वो आपके साथ हुआ नहीं है, बट अभी भी आप उसको सच मानते हो. Means you've not experienced it, but you still believe it's true. It's true. So those truth are generalized truth. Okay. Like हमने अगर हमारे पेरेंट्स से के बारे में बात करें तो, या हमारी सराउंडिंग के बारे में बात करें, जिस सराउंडिंग में हम लोग ग्रो किए हैं, राइट? तो हमने सोसाइटी से सुना है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, राइट? Yeah. तो हम अभी तक हमारी लाइफ में ये मानते आते थे कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, राइट? और वो उन्हीं लोगों के लिए मुश्किल है, बट हम अभी तक हमारे पास जो रेफरेंसेस हैं उसमें पीपल आई मीन अर्निंग मनी इन डिजिटल एरा इज वेरी इजी, राइट? बहुत से लोगों के बिलीफ है कि कैंसर जानलेवा है. So, Jinx, tell me, is this the universal truth or is it a generalized truth? It's a generalized truth, of course. And people may say कि डायबिटिक कभी ठीक नहीं होती, डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती. So this is the universal truth or generalized truth? Generalized truth. है ना? देखिए, कोई भी चीज है ना, किसी कॉन्टेक्स्ट में कही जाती है. कहा यह गया था कि एलोपैथी से डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती. But what we do, we forget the context. We always remember the content. अगर आप ये कहोगे कि गर्म कपड़े अच्छे होते हैं, हाँ डेफिनेटली अच्छे होते हैं. अगर सर्दियों में पहनोगे तो, गर्मियों में पहनोगे तो लोग पागल कहेंगे. Exactly. Makes sense. तो हमेशा कोई भी बात किसी कॉन्टेक्स्ट में ही सच होती है, राइट? बट हमने हमारे अंदर बहुत सारे जनरलाइज बिलीफ को पाला हुआ है जो हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, प्रोफेशनल, रिलेशनशिप और वेल्थ की ग्रोथ को रोक रहा है, राइट? सो व्हेन एनी इंफॉर्मेशन थ्रू योर व्हेन द इंफॉर्मेशन व्हिच यू हैव रिसीव्ड थ्रू योर पर्सनल रिसेप्टर्स, when it goes inside you, it won't remain same as it was. Okay. Because now it is deleted, distorted and generalized. And after this filtration, only 1,34,000 million bytes entered in your mind. Right. ठीक है? और उसमें से भी सिर्फ 1% चीजें ऐसी होंगी जो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होंगी. जिन चीजों को आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में डाल दोगे, वो सारी चीजें आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे. एंड व्हाट इज दिस RAS सिस्टम? लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस. Jinx, have you felt this कि when you were planning to buy a car for you, जब तुमने डिसाइड किया कि मेरे को ये कंपनी का ये मेक और ये मॉडल चाहिए, तो तुमने पाया होगा कि जैसे ही तुमने ये डिसाइड किया होगा, इसके पिक्चर्स को देखा होगा या इसमें बैठ के टेस्ट ड्राइव को लिया होगा, तो मैं रोड पे भी वही गाड़ियां ज्यादा दिखनी शुरू हो गई थी. Yes. है ना? होता है ना कि जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो वही चीजें फिर हमको ज्यादा दिखाई देने लगती हैं. ऐसा नहीं है कि वो पहले इस दुनिया में नहीं थी, वो पहले भी थी, बट वो आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में उन चीजों को आपने नहीं डाला था, इसलिए आपका माइंड उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा. तो कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट हुई, डिस्टॉर्ट हुई, जनरलाइज हुई, और वो अब वैसी नहीं है जैसी घटित हुई थी. अब वो कुछ और बन चुकी है, और वो जो अंदर बन के इवेंट 2 के रूप में पड़ी हुई है, और वही आपकी मेमोरीज है. उन्हीं को मनोदशा बोलते हैं. पीपल से मूड, वो इवेंट 2 ही आपका मूड बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं. उसी को हम परसेप्शन कहते हैं, क्योंकि उसको आपने अपने पर्सनल रिसेप्टर से रिसीव किया. ठीक है, अपने स्टेशन पर रिसीव किया, तो इसीलिए ये वर्ड वहां से निकला, परसेप्शन. कई लोग इसी को इंटरनल मैप कहते हैं. इंटरनल मैप क्यों? क्योंकि देखिए, when you come to when you are living in a house
for almost 10 years or 12 years or more than that. और उस घर में अभी आप बैठे हुए हैं, सडनली डार्क अंधेरा हो जाता है, करंट चला जाता है, बट बिना किसी चीज से टकराए आप अपनी जगह से खड़े होंगे, किचन में पहुंचेंगे, वहां से लाइट उठाएंगे, अपनी आखी कैंडल लाइट करेंगे और अपने अपने उसी काम में लग जाएंगे जिस काम में आप थे, राइट राइट। बट अगर आप किसी नए घर में चले जाएं, नए घर में शिफ्ट हो जाएं, राइट और ये घटना वहां पे हो जाए, तो आप इस काम को उस परफेक्शन से नहीं कर पाएंगे, आप बहुत बार बहुत सारी चीजों से टकराओगे, राइट तो इसी को इंटरनल मैप भी कहा जाता है। कई लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि ये मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, सो ये इवेंट टू जो पड़ा हुआ है अंदर वही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, राइट। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इसी को जोन कहते हैं, कि मैं एक अच्छे जोन में नहीं हूं या वो एक अच्छे जोन में नहीं है, राइट। प्लेयर्स की लैंग्वेज में बात करें तो इसी को फॉर्म कहते हैं, क्या सचिन बहुत अच्छी फॉर्म में था, उसने 200 रन से स्कोर किए, बट आज सचिन अच्छी फॉर्म में नहीं है, पहली ही बॉल पे आउट हो गए। सो ये इवेंट टू ही है जो आपकी फॉर्म को बिगाड़ रहे हैं या बना रहे हैं, राइट। और इसी को हम स्टेट कहते हैं, ये इवेंट टू ही आपकी स्टेट है, राइट। सो अब आपकी स्टेट है ना जिंक्स, दो तरीके की होती है। You have two type of state. One is your positive state and one is your negative state, right? Jinx, can you allow me to share my whiteboard? Yes. So it will be easy for all the people to understand. I've given the right. Okay. Okay. So see, ये इवेंट 1 है और यहाँ पे हमारे इवेंट 2 है जो अभी हमारे माइंड में पड़े हुए हैं, राइट। और ये वैसे नहीं है जैसे हमने इनको देखा था या सुना था, क्योंकि अगर आप पास्ट की किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करो तो वो आपको एज इट इज याद नहीं होगी, उसके कुछ फ्रेम आपको याद होंगे, कुछ फ्रेजेस आपको याद होंगी जो लोगों ने कही थी, राइट। और यही इवेंट 2 आपका जो है स्टेट बनाती है, राइट। And that state is positive or negative state, right? हाँ। सो अब ये देखिए कि ये स्टेट भी आपकी या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये आप जिस भी स्टेट में रहेंगे उस स्टेट में आप दो तरीके से एक्ट करते हैं, दो तरीके के एक्शन लेते हैं, या तो आप वर्बल एक्शन लेंगे या नॉन वर्बल एक्शन लेंगे, राइट। और स्टेट को और क्लियरली डिफाइन करूं तो मैं हमेशा पॉजिटिव स्टेट को रिसोर्सफुल स्टेट कहूंगा, ओके। और नेगेटिव स्टेट को अनरिसोर्सफुल स्टेट कहता हूं, क्योंकि आप किसी भी स्टेट में रहें, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव स्टेट में हैं या रिसोर्सफुल स्टेट में हैं तो हाउ यू फील कॉन्फिडेंट, राइट, you feel happy, you feel focused, you feel productive, and when you are in a negative state you feel depressed, sad, unfocused, unproductive, right. So whenever you are in a resourceful state, if you have limited resources, if you are happy and you are having very limited resources, so in those limited resources also you can build a better product, you can produce better results. So that's why I call resourceful state, right. And negative state, why I call negative state unresourceful state, if you are not happy, you are sad, you are unfocused, and you have a lot of resources with you, right. But I can bet you, if you are sad, if you are not in positive state, you are not able to use those resources effectively, right. Makes sense. Yeah, right. So that's why I call unresourceful state. और आप किसी भी स्टेट में रहो, आप दो तरीके से एक्ट करते हो, one is verbally, one is non-verbally, right. Like you take action to like two type of action you take in that state, one is verbal action, one is non-verbal action.
right? What is verbal action? Where you use verbs, right? And non-verbal action, your facial expression, your body language, your gesture. Like if you have seen many people standing in front of you like this, so it means I'm not interested in your talk. You go ahead, बोलते जाओ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है. आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि जब आप उनके घर पे जाते हो तो वो अपने पैर के ऊपर पैर रख के और सोफे पे ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं. ये बॉडी लैंग्वेज बोलती है कि मैं मेरे घर का शहंशाह हूं. आई एम ए किंग ऑफ माई होम. बताओ आपको क्या परेशानी है. ट्रू. राइट. तो ये वर्बल एक्शन और नॉन वर्बल एक्शन जो आपने लिए, इनकी वजह से आप अपनी लाइफ में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हो. और वो रिजल्ट भी दो तरीके के हैं. वन इज डिजायर्ड रिजल्ट and one is undesired results. So what are the desired results? Where you are happy, healthy, your relation is harmonious, you are having abundance, wealth, right? And what is undesired result? Where you are feeling diseased, you are having any sickness, you are not happy, your relationship is not good, you are not productive, you are having failures in your life. So these are the undesired results. अगर हम अब बैकवर्ड चलें तो बैकवर्ड में हम पाएंगे कि आपके रिजल्ट कहां से बन रहे हैं. रिजल्ट आपके बिल्ड हो रहे हैं आपके एक्शन से. आपके एक्शन कहां से आए? एक्शन आपके बिल्ड हो रहे हैं आपके स्टेट से. स्टेट कहां से बिल्ड हो रही है? स्टेट बिल्ड हो रही है इवेंट 2 से, जो यहाँ पे पड़े हुए हैं. इवेंट 2 कहां से बिल्ड हो रहे हैं? इवेंट 2 बिल्ड हो रहे हैं इवेंट 1 से, उन घटनाओं से जो घटित हुई हैं. राइट. राइट. अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी कि आप अपने पास्ट में जाके उन इवेंट 1 को चेंज कर दो. True. You cannot change your past. You cannot change what happened. But the good thing is you can change your event too. Right? So you're saying that there is a possibility that even if the event 1 has registered in your mind as event 2, there is a possibility to change it back to what it was. Is it? Right. See, whatever your memories are there in your subconscious mind, they are stored in a three form. In visual form, in the form of pictures, in auditory form, in a form of audios or the things which you have heard and that in that situation, and in the form of feelings. And feelings come when you see and hear anything, because feelings is in the body. Right. So your every experience has a structure. आपका कोई भी अगर कोई सैड एक्सपीरियंस है तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है कि उसमें आपने कुछ गलत देखा है, गलत सुना है. राइट. अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है. राइट. और इस स्ट्रक्चर को बदल के आप अपने एक्सपीरियंस को बदल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, Zinks, I know that you cook very, you prepare very good tea. Right? तो बताओ जरा आप मैं भी यहाँ पे चाय पिलाऊंगा आपको, आप पहले अपनी चाय बना के पिलाओ मुझे. राइट. क्योंकि आपके उस एक्सपीरियंस का एक स्ट्रक्चर है. राइट. आप जो चाय पिलाएंगे उसका एक टेस्ट है, वो एक एक्सपीरियंस है. ठीक है. और जिस तरीके से आप चाय बनाएंगे वो एक स्ट्रक्चर रहेगा. राइट. तो चलो आप पहले आप अपनी चाय बनाओ, फिर मैं मेरी चाय आपको पिलाऊंगा. So how you cook? So I take a vessel, right? In that I put some milk. That's my way of making tea, right? So I don't put a lot of water in my tea. So I use a pure milk tea usually. So I pour a cup of milk, then add a little bit of water, because when it evaporates, it just, consistency is good, and then it'll come back to the what level of I wanted the tea should be. Then I put 1 teaspoon or a teaspoon and a half of tea powder, right? Then I let it a little boil. Then I add a little grated ginger and then sugar. And then I let it boil for at least 5 to 7 minutes, and then I drain it and I drink it. Okay. So this tea which I am taking now,
which you have prepared for me. It's it have very good taste, right? But अब इसी चाय को मैं बनाऊंगा, बट इसके स्ट्रक्चर को अल्टर करूंगा मैं, इसके Okay. स्ट्रक्चर को चेंज करूंगा. ठीक है. Okay. So how I prepare tea? I take a vessel, I put a milk in that, Right. and I allow this milk to be boiled. Okay. When it boils, I put a as you put used one teaspoon of tea powder, Yes. right? Half teaspoon of sugar, Right. and I allowed again to boil. Right. Okay, and after this, I have added 1 cup of water. Okay. Okay, because I'm preparing tea for me and you, so I have added 1 cup of water also, and Okay. now I'm allowing this water to be boiled. Now hold up, I mean अब ये चाय जब boil हो रही है, और एक और इसमें मैंने boil लाने के बाद में मैंने इसको filter किया. ठीक है. और अब आपको सर्व किया, तो आपने थोड़ा पानी डाला था, मैंने पानी ज्यादा डाला है, तो एक ही स्ट्रक्चर को बदला अभी हमने, मतलब उसकी थोड़ी क्वांटिटी को बढ़ाया है. बताओ आपकी चाय और मेरी चाय का टेस्ट सेम होगा? नहीं. नहीं ना. नहीं. ठीक है ना. तो सेम वे में जैसे ही हम अपने इस स्ट्रक्चर को अल्टर करते हैं, बदलते हैं, यू कैन चेंज योर एक्सपीरियंस. Yeah. राइट. Good. अगर आपकी मेमोरीज में कोई विजुअल्स पड़े हुए हैं, उन विजुअल्स को हम बदल दें. जो आवाजें पड़ी हुई हैं, उन आवाजों को बदल दें. जो फीलिंग पड़ी हुई है, उन फीलिंग्स को बदल दें. तो यू कैन चेंज दैट इवेंट टू. Very nice. Right? Makes sense. So, do you want to experience it? Yeah, let's do that quickly. Okay. So, I want you to go into the past and remember, imagine any event that is painful for you. Okay. Should I close my eyes? Pardon? Should I close my eyes or I should be? Yeah. Keep your do one thing. Now keep your spine straight. Okay. Shoulder wide open, as if you are confident. Close your eyes. Inhale deeply for a second. Inhale deeply, hold for a second, and release it through your mouth. Very good. Take one more deep breath. Hold for a second and release it, and allow yourself to go into your past and go to the event where you were low of confidence and you were feeling very sad. Normally आप सांस लेते रहेंगे. क्या पास्ट का कोई ऐसा इवेंट है, कोई इमेज आ रही है आपके माइंड में जिसमें आप दुखी थे, परेशान थे? There were many, but I'm just trying to find out one specific. अगर कुछ ऐसी इमेज नहीं है तो कल की किसी इवेंट को ले लो. I have that event in my mind. Okay. So, do you have that image in your mind? Yes. Oh, okay. So tell me whether it's a colorful or black and white. It's a colorful image. Okay. So do you have any sound in it, or it is a mute? Mute. Mute. Very good. Do you have any movement in it, or it's a freezed one? It's one single movement, which is just like a boomerang. Okay. Okay. Very good. Now imagine करो कि आपसे सामने कुछ दूरी पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की वॉल है. ओके. और इस ग्लास की दीवार के वॉल के दूसरी तरफ एक टेबल रखा हुआ है. देखो उस टेबल को. उसका कलर क्या है? वो वुडन है, मेटल है, या प्लास्टिक है? वुडन है. ओके. वेरी गुड. और अब इमेजिन करो कि इस वुडन टेबल के ऊपर पुराने जमाने का एक टीवी रखा हुआ है. Okay. Okay. And now imagine कि you are holding a remote in your right hand. और वो रिमोट उस टीवी से कनेक्टेड है. Now put on press the power button. उस टीवी को इमेजिन करो कि उस पावर बटन को रिमोट पर प्रेस करो, अपने थंब को ही अपनी फिंगर पर प्रेस करो, और इमेजिन करो कि आपने टीवी को ऑन किया है
और जैसे ही ये टीवी ऑन हुई है, आपकी मेंटल स्क्रीन से पास्ट की वो इमेज अब टीवी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो गई है। Okay. देखो उस इमेज को उस टीवी स्क्रीन के ऊपर। Mhm. Yeah, एंड टेल मी वेदर इट्स a कलरफुल और ब्लैक एंड व्हाइट। it's a colorful image. ओके, क्या यहाँ पे अभी टीवी से कोई साउंड भी है? नहीं. कोई कोई फीलिंग भी एसोसिएटेड है इस पिक्चर से? Yes. ओके, क्या इस पिक्चर में मूवमेंट अभी भी स्टिल देयर इज अ मूवमेंट और इट्स अ फ्रीज? Now it's a freeze moment. I mean, there's a ओके, freeze तो picture. ओके चलिए अब इमेजिन कीजिए कि आप अपने थंब को उंगलियों पे प्रेस करते हुए इमेजिन करो कि अब रिमोट के ऊपर आपने एक और बटन को प्रेस किया है, और थोड़े बहुत भी अगर मूवमेंट है इसमें तो उस बटन को प्रेस करते ही वो सारे पिक्चर्स जो है फ्रीज हो गए, एक स्टिल इमेज के रूप में आपको दिखाई दे रही है। Okay. ओके, Mhm. अगर कोई साउंड भी थोड़ी बहुत इधर उधर से अगर सुनाई दे रही है तो इमेजिन करो कि आप अपने रिमोट के ऊपर वॉल्यूम के बटन को प्रेस कर रहे हैं, और इमेजिन करो कि येलो कलर की लाइन को उस स्क्रीन के ऊपर वो स्लोली 20 से नीचे आती जा रही है, 0 तक आ गई है और आपने उसको म्यूट कर दिया है। Mhm. वेरी गुड। और इमेजिन करो कि अब आपने रिमोट के ऊपर एक और बटन को प्रेस किया है जिससे इस टीवी के सारे कलर गायब हो चुके हैं और ये सारी इमेजेस अब आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रही हैं। Okay. Mhm. इमेजिन करो यू आर प्रेसिंग ए बटन ऑन योर रिमोट, और ये बटन टीवी और एवी का है, और जैसे ये बटन प्रेस किया ये इमेजेस वेनिश हो चुकी हैं और बहुत सारा डिस्टरबेंस अब आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। Mhm. वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इमेजिन करो कि आपके रिमोट पे सेंट्रल में एक रेड कलर का बटन है, Mhm. हिट दैट बटन और इमेजिन करो कि टीवी अब रॉकेट बन के आपकी आंखों से दूर कहीं आसमान में उड़ रहा है, आपसे दूर जा रहा है, इसके साइज को छोटा होते हुए देखो, और इस टीवी की तरफ रिमोट करते हुए एक और बार रिमोट के रेड कलर के बटन को प्रेस कर दो और देखो इसको एक और थ्रश मिला है और ये सीधा सूरज की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है और सूरज से टकरा के जलना शुरू हो चुका है। देखो इसके पार्ट्स को जलते हुए, वैनिश होते हुए। क्या दिखाई दे रहा है वहां पे? Light. ओके, वापिस से सामने की तरफ देखो, रिमोट के ऊपर एक बटन को प्रेस करो और इमेजिन करो कि वो ग्लास की वॉल कहीं साइड में स्लाइड हो चुकी है, और उस Okay. जगह पर इमेजिन करो पास्ट की उस इमेज को जब आप कभी बहुत ज्यादा खुश थे। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट। वेरी गुड। और इमेजिन करो पास्ट की उस घटना को जिसमें आपको कभी रिवॉर्ड मिला था, कोई अवार्ड मिला था, या पहली बार आपको किसी ने प्रपोज किया था। व्हाट वाज द फीलिंग? Happy. मेक दोज इमेजेस बिगर, ब्राइटर, बोल्डर एंड कलरफुल। Mhm. वेरी गुड। एंड नाउ मूव योर फिंगर्स, rub your palms, keep on your eyes and open your eyes slowly. Wow, this was really, really amazing. And now tell me, if the intensity of that image 10 out of 10, right? So after doing this exercise, now close your eyes and with your open eyes also, and with closed eyes also, go to that event and tell me कि क्या उसकी intensity अभी भी उतनी ही है? I don't think so. नहीं ना? Yeah, this was something very, very. I think I would rather call it magic, because this. So the event which I thought was disturbing for me, but now I think it's not so disturbing for me because now it's gone, right? So it's away from my mind now, I think. So अभी मैं अगर इसकी इंटेंसिटी जिंक्स 0 to 3 के बीच में है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। Hmm. अगर इसकी इंटेंसिटी 3 से ऊपर है तो एक और बार रिपीट कर लेना, इसकी इंटेंसिटी को 0 to 3 के बीच में ला देना, ये फ्यूचर में कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी आप। Makes sense. This is really helpful. Yeah. I mean, I think if anybody wants to practice this as well, that can help them remove that intensity of event two, which is disturbing to them, right? एग्जैक्टली So
Yeah, I think this is really helpful, and I think I feel a little, happy now, because I think I've came out of that exercise happily, because I was already in a happy image, right? So yeah, I think this was something good. I mean, really, this is really good. I mean, I think if you have learned a lot with your mentors, with your experience, with your life story, and I think now what you're doing with other people is really, amazing. And I'm sure that people who will watch this video and see us doing this exercise, and they start doing this exercise, I think they will definitely find a change. So I think this is really, really helpful. या डेफिनेटली, क्योंकि मैं चाहता हूँ अजिंक्य, एक मैं खुद एक ऐसे मिशन पे हूँ Hmm. जो इस दुनिया को और भी ज्यादा खूबसूरत, एक लिवेबल प्लेस बना सकूं, Right. जहां पे आज पहले ही मीडिया ने आपको इतना सारा बर्डन दिया हुआ है। हालांकि आपको एक और बात बताऊं जिंक्स, कि 2020 में जब कोविड पीक पे था अपने, Mhm. और May 3rd आई गॉट इन्फेक्टेड, राइट। और उस टाइम पे मेरे को लेफ्ट साइड प्लूरल इफ्यूजन हुआ था। जो Okay. पल्मोनोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला, ब्रदर लेफ्ट साइड के फेफड़े में पानी भर गया, 2.5-3 लीटर है और वो टैप करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर मेरे को 4 दिन का टाइम दो, मैं 4 दिन बाद टैप कराऊंगा। और चूंकि कोविड के लिए कोई दवाई तो थी नहीं, वही Right. विटामिन सी और जिंक और ये सारी चीजें चलती थी। तो मैंने मेरे मेंटर्स को फोन किया, मैंने कहा सर मेरे को कोविड हुआ है और डॉक्टर्स का कहना है कि मुझे लेफ्ट साइड इफ्यूजन है। तो उन्होंने मेरे को, ऑलरेडी चीजें मालूम थी बट उस टाइम पे फोकस कहीं और था, तो वो चीजें नजर नहीं आ रही थी सामने। तो उन्होंने Mhm. मेरे को रीगाइड किया कि नहीं अमित, तेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसका इस्तेमाल करो। और Mhm. मैंने उस प्रोसेस को, दिन भर कोई काम तो रहता नहीं था, उस प्रोसेस को 40 से 50 बार पर डे मैं अपने ऊपर रिपीट करता था। और जिंक्स, यू वॉन्ट बिलीव कि 4 दिन बाद जब एक्सरे और सीटी हुआ ना मेरा, वो Mhm. पानी नहीं था वहां पे। वो Wow. पल्मोनोलॉजिस्ट बोलता है, ब्रदर वो गया कहाँ, मैं बेट लगा सकता हूँ कि पानी था तेरे को। Mhm. Wow, तो this यू is कैन really, हील योर बॉडी, yeah, यू कैन हील योर बॉडी, राइट। और आपका माइंड इतना पावरफुल है कि आपकी किसी भी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता absolutely, absolutely. है, ठीक है। क्योंकि टिल 2017 मेरे फादर मेरे लिए एक इमेजिनेशन ही थे, कि पता नहीं Mhm. वो है भी कि नहीं है, Mhm. राइट। पर मेरे अंदर एक बिलीफ था कि इस जन्म में मैं उनसे एक ना एक दिन जरूर मिलूंगा। Right. तो आफ्टर 37 years ही अपीयर, अपने कुछ चेलों के साथ में वो अपीयर हुआ। वो संत बन चुके थे, उनका जयपुर से कुछ दूरी पर उन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ था, वहीं पे पिछले 25-30 साल से वहीं पे सेवा में लगे हुए थे। Mhm. लोग बोलते हैं जिंक्स की उन्होंने 12 साल कुछ नहीं खाया था, अन्न जो हम ब्रेड वगैरह ये सब खाते हैं वो कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ Mhm. दूध पीते थे। उनकी एक गाय थी उसका, और 9 साल तक बिना स्पीकिंग, बिना किसी बातचीत के वो रहे। Okay. अपना काम सिर्फ लिख के करवा लेते थे लोगों से। और Mhm. जब कई सारे बच्चे थे जो, और वो बताते हैं कि बाबा को हमने कभी है ना इस मंदिर से बाहर जाते हुए कभी नहीं देखा, Mhm. कि किसी से जाके मांगना है या बेग करना है, ऐसा कभी नहीं था। बट जब वो 2017 में मेरे सामने आए 36 साल के बाद, तो ये मेरा एक बिलीफ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि ये आपकी किसी भी इमेजिनेशन को कन्वर्ट कर सकता है। Makes sense. Yes. क्योंकि चाहते तो वो पहले भी तो आ सकते थे, Mhm. ठीक है। उससे कुछ दिन पहले, लास्ट ये दीपावली की बात है, मेरे बेटे ने मेरी मम्मी से पूछा कि दादी ये कौन है। एक पिक्चर टंगी हुई थी मेरे फादर की, मैं और मेरा छोटा भाई। बोले ये कौन है, बोले ये तेरे पापा है। बोले ये कौन है, ये तेरे चाचा है। बोले ये मालूम है मुझे ये कौन है। ये बीच में कौन है, बोले ये तेरे बाबा है। और बोलता है कि तो बाबा कहाँ है, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो मैं अपने बेटे को वहां से लेके निकला। और ये उसके सिर्फ 4 दिन बाद की बात है। Wow. तो आप जिस चीज में अटूट विश्वास रखते हैं वो आपके साथ होती ही है, होना ही Agree. है उस चीज को, राइट। Agree. और इस घटना से रिलेटेड एक कहानी याद आती है मुझे जिंक्स, Mhm. कि एक संत थे। और एक कहानी हिंदी में ही सुनाऊंगा मैं, हाँ हाँ क्योंकि हिंदी बिल्कुल. में सुनने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। एक संत थे जिनके बारे में ये फेमस था कि वो जब भी डांस करते हैं हमेशा बारिश होती है।
राइट। तो हमारे तुम्हारे जैसे 4-5 यंगस्टर थे, थोड़े से ज्यादा पढ़ लिख गए थे, साइंस के ऊपर ज्यादा बिलीव था उनको। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पागल बनाने की उनकी स्कीम है। अगर उनके नाचने से बारिश होती है तो हमारे नाचने से भी होनी चाहिए फिर। तो वो उस बाबा की, उन संत की को चेक करने के लिए, पावर्स को चेक करने के लिए उस गांव में पहुंच गए। बाबा तक ये, संत तक ये बात पहुंची। तो लोगों ने बोला, संत ने बोला ठीक है, कल सुबह 7 बजे से वो लोग स्टार्ट करें अपना डांस करना। पहले वो करेंगे, फिर बाद में मैं बताऊंगा मेरी पावर क्या है। तो बोले ठीक है। अब वो 5 दोस्त थे, सुबह 7 बजे से डांस करना शुरू हो गए। 9 बजते बजते एक इंसान 2 घंटे में थक के नीचे गिर गया, बोले अब मेरे से नहीं हो रहा। तो दूसरे ने शुरू किया, दूसरे से भी नहीं हुआ, 12 बजे तक वो भी थक हार के नीचे गिर गया। तीसरे ने शुरू किया, वो भी गिर गया। चौथे ने, पांचवे ने, वो शाम हो गई पर बारिश का कहीं कोई नामो निशान नहीं। तो बोलते हैं, देखा, हमने कहा था ना हमारे नाचने से अगर बारिश नहीं हो रही है तो बारिश नहीं होती, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगला दिन बोले कि रुको, अभी बाबा का नाचना बाकी है, गांव वाले बोले। अगले दिन सुबह हुई और सूर्य उदय होते ही बाबा अपनी जगह पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपना डांस करना शुरू किया। 12 बज गए, दोपहर हो गई, तब तक कोई बादलों का नामो निशान नहीं। 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, अब सूर्यास्त का टाइम होना शुरू हो गया, सूरज डूबने वाला है। और अचानक से लोग देखते हैं कि चारों तरफ से काले काले बादल इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और जोरदार बारिश वहां पे शुरू हो गई। तो वो चारों पांचों जो लोग थे उनके पैरों में गिर गए, बोले महाराज हमें माफ कर दो। बोले हमने आपकी इस पावर पे शक किया। पर हमारे अंदर एक सवाल है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हम डांस किए तो बारिश नहीं हुई, बट आपने किया तो इतनी तेज बारिश हो रही है। तो बोले मैं जब भी कोई भी काम करता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली चीज तो कि इस काम को यदि मैं कर रहा हूं तो मेरे अलावा कोई दूसरा इसको पूरा नहीं कर सकता, और जब तक ये काम पूरा नहीं होगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। कमिटमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ में इसी तरीके से जीते हैं कि काम को शुरू करते हैं कि हाँ ये काम हम करेंगे, और काम करते करते जब उसमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, मतलब रिजल्ट मिलने ही वाले होते हैं, उससे पहले हम गिव अप कर देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा। राइट। राइट। तो लाइफ में जो भी आप सोचते हैं, वट एवर यू कैन थिंक, अगर आपका माइंड किसी चीज की कल्पना कर सकता है तो उसकी रचना भी कर सकता है। राइट। राइट। क्योंकि 1903 से पहले एरोप्लेन नहीं थे, और जब राइट। राइट ब्रदर्स उस एरोप्लेन को बना रहे थे तो लोगों ने उनको पता नहीं क्या क्या बोला होगा कि पागल है, कहीं ऐसा होता है कि लोहा हवा में उड़ेगा। और उनके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस भी नहीं थी, वो सिर्फ साइकिल सुधारने वाले मिस्त्री थे। बट उनके माइंड ने उनको गाइड किया, उनके सबकॉन्शियस ने उनको उस तरीके से गाइड किया कि उन्होंने एक ऐसी मशीन बना डाली जो आज की डेट में, उसमें जब काफी सारे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, कि आज की डेट में हजारों लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जहां दिनों का टाइम लगता है, वहां मिनटों में, सेकंडों में और घंटों में पहुंच जा रहे हैं। अग्री। राइट। और अभी तक हमें जितने भी मैनेजमेंट सिखाया जाता है, जितनी भी किताबों से हमें जो मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है जिंक्स, उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। राइट। मेरे हिसाब से इस दुनिया में टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी होता है वो सिर्फ प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है। क्योंकि जो चीज आपकी प्रायोरिटी पे होगी उसके लिए आप टाइम निकाल ही लोगे। अग्री। आपको रोज ऑफिस जाना है तो आपकी प्रायोरिटी अभी ऑफिस जाना है, क्योंकि नहीं जाओगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी राइट। नहीं मिलेगी तो घर खर्च नहीं चलेगा, घर खर्च नहीं चलेगा तो बीवी बच्चे सब परेशान होंगे। राइट। राइट। तो हम उसके लिए कैसे भी टाइम निकालते निकालते हैं। राइट। अब अगर आप ऑफिस में हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर आप बैठे हुए और आपको मैसेज मिलता है कि आपके बेटा सीरियस है, उसको आईसीयू में एडमिट करा रहे हैं, तो आप कैसे भी उस चीज को पोस्टपोन करके आप अपने फैमिली के लिए जाते हो कि नहीं जाते हो? राइट। राइट। तो एब्सोल्युटली कहीं यस। आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत पड़ी नहीं ना, आपकी बस प्रायोरिटी शिफ्ट हुई है।
और जब हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो कॉर्पोरेट में हमें टास्क दिए जाते हैं, गोल्स दिए जाते हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं कि उन चीजों को अचीव करना है आपको, उन चीजों को टाइमली बाउंड कर दिया जाता है कि उन चीजों को टाइमली अचीव कंप्लीट करना है। पर हम गलती क्या करते हैं कि हम जो जो नॉन प्रायोरिटी वाले वर्क हैं उनको, जो आसान काम है उनको पहले करते हैं, राइट। और जो हमारे प्रोडक्टिव काम होते हैं जिनको हम पहले खत्म करना चाहिए उनको हम बाद में खत्म करते हैं, क्योंकि उनको टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो जब आप टाइम टेकिंग टास्क को बाद में कंप्लीट करोगे तो आप हमेशा एक हड़बड़ी में रहोगे, एक वरी में रहोगे, एक अनसर्टेनिटी में रहोगे कि यार ये कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जितने भी True. आपके टाइम टेकिंग टास्क है ना, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्लीट करो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये छोटे काम है, इनको हम लास्ट में भी छोटे छोटे टाइम भी कम कम टाइम भी दिया तो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। और दूसरी चीज अजिंक्य, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने लोगों को टास्क ओरिएंटेड बना दिया है। जैसे बच्चों को, मैंने मेरे बेटे से एक बार पूछा कि आरब तुम पढ़ाई क्यों करते हो, या आप लोग बोलते हो इसलिए करते हैं। मैंने कहा उससे हासिल क्या होगा। चलो हमने तो बोला, आपने कर ली, बट उससे हासिल क्या हुआ। बोले नहीं, मैडम बोलती है कि पढ़ने से, अच्छे पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो नौकरी मिल जाएगी। यानी, और मैं दादी बोलती है कि नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी, तो उनको पढ़ाई के पीछे मोटिवेशन का कारण ये भी है कि शादी भी करनी है। और ये सब चीजें हमारे आपके साथ भी हुई, Yes, of course. राइट। तो हम लोगों को एक टास्क ओरिएंटेड बना दिया कि ये टास्क कंप्लीट करो आपको आउटकम मिलेगा, ये टास्क Right. कंप्लीट करो आपको आउटकम मिलेगा। और जितने भी टास्क ओरिएंटेड लोग हैं वो सारे के सारे जॉब ओरिएंटेड हैं, Right. ठीक है। वो एक टास्क को सेंटर में रखते हैं और अब अपने आउटकम को अचीव करने के लिए उस टास्क को कंप्लीट करना शुरू करते हैं। जब उस टास्क से, एक जॉब से, मान लो एक इंसान एक जॉब कर रहा है और उससे वो चाहता है कि एक लग्जरी लाइफ उसे मिले, जब उस आउटकम को अचीव नहीं करता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, Right. राइट। और उस फ्रस्ट्रेशन में अब वो ऐसे लोगों के पास जाता है जिन लोगों को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है लाइफ का बहुत ज्यादा, अपने ही जैसे दोस्तों के पास में, जिनको ज्यादा स्मार्ट समझते हैं कि यार मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, इसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। और उससे बोलता है कि यार मैं इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे वो सैलरी नहीं मिल पा रही है, सैलरी नहीं मिल रही है तो मैं अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनको क्या Right. सलाह देते हैं, काम करो, ये जॉब को क्विट करो, अगले जॉब पे शिफ्ट हो जाओ, दूसरा कोई जॉब ढूंढो अपने लिए। और जो टास्क ओरिएंटेड लोग रहते हैं ना, वो हमेशा अपने टास्क आउटकम्स को अचीव करने के लिए अपने टास्क को स्विच करते रहते हैं, राइट। वहीं पे दूसरे तरीके के लोग हैं जो कि आउटकम ओरिएंटेड है, राइट। वो अपने आउटकम को सेंटर में रखते हैं और उस आउटकम के चारों तरफ अब टास्क करना शुरू करते हैं, Right. राइट। अब आउटकम ओरिएंटेड इंसान, फॉर एग्जांपल रतन टाटा, है ना। रतन टाटा ने एक आउटकम बनाया कि मुझे इस देश के सभी लोगों तक पहुंचना है, ठीक है। और टाटा फेमस हुए टाटा स्टील की वजह से, स्टील बनाते थे। उन्होंने देखा कि स्टील सिर्फ कुछ ही, दुनिया के कुछ ही लोग हैं जो इस स्टील का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो उन्होंने शिफ्ट किया, स्विच किया कि इस स्टील से और क्या बनाया जा सकता है। तो उन्होंने उस स्टील से ट्रक बनाने शुरू कर दिए, बट यहाँ पे भी अभी अपने आउटकम तक नहीं पहुंच पा रहे। तो उन्होंने देखा कि नहीं, इस ट्रक बनाने की बजाय अब मुझे शिफ्ट करना चाहिए कार बनाने पे, क्योंकि कार को ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। Right. तो वो कार पे भी स्विच हो गए। अब भी उनका आउटकम अचीव नहीं हो रहा था कि नहीं, कार भी कुछ ही लोग हैं इस दुनिया के जो कार को ओन कर सकते हैं। तो उन्होंने टाटा नमक और टाटा टी बना दी। अब तो हर दुनिया के, हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचेंगे। Right. तो उन्होंने देखो अपने टास्क को छोड़ा नहीं। टाटा ट्रक आज भी है, टाटा स्टील आज भी है, टाटा की मोटर्स आज भी है, टाटा टी आज भी बन रही है, टाटा सॉल्ट आज भी बन रहा है। Right. इस आउटकम के अलावा वो अपने जाने कितने आउटकम्स को पूरा कर पा रहे हैं। Right. यहाँ से पैसा भी आ रहा है, यहाँ से लोगों के साथ कनेक्टिविटी भी बनी हुई है, इस पैसे की वजह से वो चैरिटी भी कर पा रहे हैं, इस पैसे की वजह से वो देश को
डोनेशन भी दे पा रहे हैं, Right. ठीक है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हम लोगों को जो टास्क ओरिएंटेड बना दिया है ना, उस मेंटेलिटी को हमको आउटकम ओरिएंटेड माइंडसेट पे लेके आना Right. Makes sense. Absolutely right. Yeah. है ना। जब हमारी मेंटेलिटी ये हो जाएगी, मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा देख, मेरे को रिजल्ट से मतलब नहीं है तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। लाइफ में हमेशा याद रखना कि तुमको, क्योंकि बीज आज ही बोया जाएगा, तब उसके रिजल्ट, उसके फ्रूट्स हमें बाद में मिलेंगे। Right. मैंने कि जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें बिकॉज यू बिलोंग्स टू जनरल कास्ट, Hmm. जॉब नहीं है। तो ऐसा अपने अंदर माइंडसेट बनाओ कि तुम दूसरे लोगों को जॉब दे सको। Hmm. तो अभी उसका इंटरेस्ट, जिंक्स पता है, वो मेरे लिए एक ऐप बना रहा है। Oh, मेरी nice. जो साइट है वो उसी ने डिजाइन की है, Very nice. ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जनरेशन्स में एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, Right. राइट। और रही बात अपनी, तो मैं और तुम्हारे जैसे, मैं और तुम दोनों मिलके हम लोगों के अंदर वो ग्रोथ माइंडसेट ला सकते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और Absolutely. अपनी लाइफ को स्मूथली जी सके, राइट। Right. Cool. जी, So I think yeah, this was really insightful, Amit. I really want to thank you. हम लोग 1 घंटा बात करने वाले थे, but I think we talked beyond, and I think it was very productive hour and a half. I think I would really want to continue this, but I think I just want to limit this discussion right now. What I will do is I will set up more connects with you, and we will focus on specific techniques that can help people grow in their career, develop a better mindset, and how they can manage tough situations at any given point of time. Right. So I think this was really, really insightful. Amit, thanks for giving us this time today. थैंक यू अजिंक्य। And I will definitely share all your details in the video link, which I'm going to do it. So you can also reach out to more people, and people can reach out to you for more help. And this is what I wanted to do for everyone as well, Amit. Share knowledge, share value with the people, so that people can grow and develop a better mindset. Because everything, I believe that everything starts with you and your mindset. So I think that's एग्जैक्टली, what I feel as well. So thank you for the time today, Amit. This was really helpful, and थैंक I यू will अजिंक्य। I will look forward for more connects. Thank you, Ajinkya. It's wonderful talking to you, spending time with you. It's after a long time, but Yeah, really I enjoyed. I mean, I'm very happy to see you here. I mean, with you, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों कभी मिल पाएंगे, yeah, ठीक and है। discussing the similar issue with Issue, right? struggling. So I think yeah, it's a good cause. We should continue doing this. I will definitely connect with you. And now I take your leave. Thank you for coming today and talking to us. And I think you take care. सेम हियर, सेम हियर। और इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि और भी कंप्लीट किया जाए, कि जो Yeah, हमारा एजेंडा था, क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास कम है। yeah, जो क्वेश्चंस है उनके आंसर जब तक हम एक क्लियर उसमें वाइड एंगल पे नहीं देखेंगे किसी चीज को, right, तो समझ right. में नहीं आएगा वो चीज। I think let's तो let's do another session later on, which where we talk mostly about a pattern and how this pattern can be solved by your mindset, right? With examples and with some. We'll do a longer session, and then maybe people who will watch this might also want to come and ask questions. So I think that will be very helpful for you. so yes, you can start a series on this. It's a part 1, part 2, part 3. Definitely, why not? We should do that. We should do that. I'll definitely plan another session with you. ओके, ओके, सी यू देन Thank जिंक्स। Yes. मिलते हैं Bye. हम दोबारा से। बाय Yes. बाय। और इसी Bye. कामना के साथ में Yeah. आई विश यू ए गुड हेल्थ, a Thank good you. calm mind and prosperous wealth in your life. I also want to take leave from you because I really enjoyed this session, and I hope कि आप लोगों को भी मजा आएगा, जो भी लिसनर हैं, जो भी वॉचर्स हैं अपने, उनको भी Yeah. मजा आएगा। और Yes. इस सीरीज में बने रहिए मेरे और जिंक्स के साथ में। डेफिनेटली I assure you, you will get some breakthrough in your life, and Yes. we are here to help you. We both are here to help you. Cool. So it's good to talking to you. Bye bye Thank you. and Bye. take care. Take care.